In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2 का बी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। नंबर 1 सेंटेंस है, हर होश वाले इंसान को अपने बेहतर मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। Every sensible person should think about his or her her better future. नेक्स्ट है, ज़िंदगी का हर दिन हत्ता कि हर एक घड़ी कीमती है। Every day, even every moment of life is precious. नेक्स्ट है, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर मनसूबा बंदी की ज़रूरत होती है। There is need of better planning for living a better life. नेक्स्ट है, इंसान मुआशरे और अपने ज़ाती तजुर्बात से बहुत कुछ सीखता है। A human learns a lot from the society and his or her own experience. नेक्स्ट है, इंसान एक मुआशरे में रहकर बहुत सारे मामलात को हल करने का हुनर सीख लेता है। A human learns the art भी लिख सकते हैं, टैक्ट भी लिख सकते हैं, of solving a lot of problems. A human learns the art of solving a lot of problems by living in a society. नेक्स्ट है, हर मुआशरे में समाजी बुराइयां होती हैं। There are social evils in every society. नेक्स्ट है, हर मुआशरे में बुराइयों पर काबू पाने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। In every society, laws have been made to control the evils. नेक्स्ट है, किसी भी मुल्क के अच्छे शहरी हमेशा कानून की पाबंदी करते हैं। Good citizens of any country
always abide by the law. By the law. नेक्स्ट है कानून जराइम पेशा अफराद और कानून की नाफरमानी करने वालों को सज़ा देता है. लॉ punishes the criminals and those who disobey the law, those who disobey it. नेक्स्ट है कानून हर शहरी की जान व माल की हिफाजत के लिए बनाया गया है. लॉ हैज़ बीन मेड to protect life and property of every citizen. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and share this video with the learners. Thank you for watching. See you